अच्छा, स्क्रीन जरा कंफर्म करें आपके साथ शेयर होगी। कंफर्म करें कि स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। यस सर, हो गई है। तो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन की फार्मूलेशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करने के प्रोसेस को फार्मूलेशन कहा जाता है। और उसके बाद एक दफे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप कर लें फिर उसको सॉल्व करते हैं, जो कि दूसरा पार्ट है जो कि हम बाकी मॉड्यूल में कवर करेंगे। अच्छा, आपके क्लास में कोई फॉरनर है तो फिर मैं इंग्लिश में स्टार्ट करता हूँ। आपके क्लास में कोई फॉरनर है? सियाल? Okay, so let me start in English. Last time we discussed how to develop the equation of motion for a single degree of freedom system. And we will consider very simple cases of single degree of freedom system because the subject is elementary. There are a number of equation of motion for single degree of freedom system, but the vector-based methods are two. One is Newton's second law of motion, and the second one is D'Alembert principle of dynamic equilibrium. Since you are quite familiar with the equilibrium, so therefore in the rest of the course we will use D'Alembert principle of dynamic equilibrium. And we discussed both the methods last time. Now, in order, if you remember, if you follow movement of cursor, this is the equation of motion. So in order to develop the equation of motion, you must have stiffness, viscous damping coefficient, mass, and external dynamic force. In this, the stiffness is sometimes required to be calculated. For a system which does not compose of a single member, we need to calculate the stiffness. Therefore, in next few slides, we will discuss how to determine the stiffness of a system which is composed of two or more than two members. Since structural members or even mechanical systems can be considered as composed of
springs. For example, if we have a single story, single bay frame, there are two columns. These two columns can be considered as two springs because it has properties like spring. Spring can be stretched or compressed, and while doing so, it stores the strain energy. And if we remove the force, the spring will come back to its original position, just like if a structural system is loaded. The columns undergo deformation and store strain energy. When you remove the force, if the stresses are within the elastic limit, the column will come back to its original position. Therefore, we can idealize structural members as springs. Now, springs in a system can be connected by two methods. Number one, when they are connected in parallel. When two springs are connected in such a way that we apply an external force P, and that force is distributed among both the springs. Such an arrangement is known as springs connected in parallel. अगर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग इससे कनेक्टेड हों कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और वो एक्सटर्नल फोर्स इन तमाम स्प्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एक वन किप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब ये अरेंजमेंट ऐसा है कि वन किप फोर्स का कुछ पोर्शन ये पहला स्प्रिंग रेजिस्ट करेगा, बाकी दूसरा स्प्रिंग रेजिस्ट करेगा. तो स्प्रिंग्स अगर इस तरीके से कनेक्टेड हो कि वो एक्सटर्नल फोर्स को कंबाइंड रेजिस्ट करते हो, इस अरेंजमेंट को स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज कहा जाता है, इन पैरेलल कहा जाता है. Now we are dealing with the single degree of freedom system. Therefore, we need to convert these two springs, or in some cases there may be 3, 4, 5 springs, by a single spring. So the problem is how to calculate the stiffness of that single spring which replace these two or more than two springs. प्रॉब्लम ये है कि अब ये दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स को हम एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास एक स्प्रिंग होता है. तो इसकी स्टिफनेस किससे कैलकुलेट करें? The derivation is given in the below few lines, and the summary is that when springs are connected in parallel, the equivalent stiffness of this single spring, which is represented by Ke, is simply sum of the stiffnesses of the springs which are connected parallel to each other. अगर springs जो हैं वो parallel connected हो तो इन springs को हम जिस single spring से replace करेंगे उसकी stiffness simply तमाम springs की stiffness के सम के बराबर होगा. Derivation से ये बात हम derive कर सकते हैं. Sometimes, now what is the practical application of springs in parallel? Here
a single story, single bay frame is given. When you apply a force, external force P, now this force, part of this force P is resisted by this column, and part of the force is resisted by the second column. And if you see that if you see springs in parallel, the external force is resisted. So therefore, such cases can be considered as springs in parallel. And in this case, the equivalent stiffness of the spring will be stiffness of column number 1 plus stiffness of column number 2. The second arrangement in which the springs can be connected is spring in series. When two springs are connected such that two or more than two springs are connected in a way such that the tail of one spring is connected with the end of other spring, such arrangement is known as spring in series. अगर springs आप इस तरीके से connect कर रहे हैं कि दूसरे spring की tail जो है पहले spring के end के साथ connect हो रही है, अगर तीसरा spring है तो तीसरे spring का tail जो है वो दूसरे spring के end के साथ connect हो रही है, तो इस अरेंजमेंट को स्प्रिंग इन सीरीज अरेंजमेंट कहा जाता है. एंड इट कैन बी डिराइव्ड दैट इफ वी रिप्लेस दिस बाय अ सिंगल स्प्रिंग, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, the equivalent stiffness of the single spring can be calculated by this equation. That is, reciprocal of the equivalent stiffness of the single spring is simply reciprocal of stiffness of first spring plus reciprocal of stiffness of second spring, and if we have a third spring, of course, plus reciprocal of the stiffness of third spring. Now its practical application. If here a cantilever beam is given and a rod is attached, in this case, okay, now in case when the springs are connected in parallel, the external force is distributed along all the springs. However, in case of springs connected in series, this is not the case. If you take a section line here, and find the internal force, तो इस केस में इंटरनल फोर्स किसके बराबर होगी? P के बराबर होगी. अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करें P के बराबर होगी. इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक सेक्शन लाइन ले लें,
और फ्री बॉडी डायग्राम इसका आप ड्रा करते हैं। और यहाँ पर आप एक्सटर्नल फोर्स मालूम कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स, अगेन दैट विल बी इक्वल टू P. So when springs are connected in series, internal force in any spring is equal to externally applied force. This system can be considered a spring in series arrangement because in this case अगर आप ये नीचे रॉड एक सेक्शन ले लें तो इस रॉड में इंटरनल फोर्स किसके बराबर होगी, कोई बता सकता है? ठीक है, मतलब क्लास में सभी, एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ सीखने की नीयत से आया, ये बात मुझे क्लियर होगी। चले, मजीद वक्त में जाया नहीं करता। इंटरनल फोर्स इसमें P के बराबर होगी, इसी तरह इस B में भी इंटरनल फोर्स P के बराबर होगी। लिहाजा दिस कैन बी कंसिडर्ड ए स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, और इस केस में स्प्रिंग इन सीरीज की जो इक्वेशन है वो हम यूज कर सकते हैं स्टिफनेस कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर चंद कम here the stiffness of some commonly used structural members are given and you have to memorize these equations. जी सर, इन दोनों का डायरेक्शन सर डिफरेंट है, तो सर ये किस तरह मतलब सीरीज में है? स्प्रिंग इन सीरीज की प्रॉपर्टी क्या है? मेरे सवाल का जवाब दे, स्प्रिंग इन सीरीज की क्या प्रॉपर्टी है? सर के सर एलांग हो, सर मतलब एक डायरेक्शन में हो, और इस तरह से एलांग हो, वो कोई नहीं है जी। सर मतलब डिफॉर्मेशन है तो मतलब डिवाइड हो सर। मैंने ये डिफिनीशन बताई है, मैंने क्या डिफिनीशन बताई? कोई बता सकता है मैंने क्या डिफिनीशन बताई है स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज की? मतलब फोर्स सर सारे स्प्रिंग में इक्वली होगा, इक्वल हो। हाँ ठीक, ये अब सही है डिफिनीशन है। तो अगर हम यहाँ पर एक सेक्शन ले लें और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लें, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इंटरनल शियर किसके बराबर होगी? ये V किसके बराबर होगी? P के बराबर। अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करें तो लॉन्ग y एक्सिस, एक तो ये फोर्स है, दूसरी ये है, तो V इज इक्वल टू P, इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो लिहाजा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज। अच्छा, नाउ
you have to memorize the stiffness of some commonly used structural elements. For example, when we have a cantilever beam load a point load at the free end, stiffness is 3EI over LQ. If you have a simply supported beam with a point load acting at the middle length, stiffness is 48EI over LQ. तो ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि आगे प्रॉब्लम में ये जो है तो काफी यूज होंगे. अच्छा, effect of relative stiffness of beams and columns on the stiffness of a structural member. Beams और columns की जो relative stiffness है इसकी structural system की stiffness पे क्या effect पड़ता है? The summary is, I will just tell you the summary. If beam is infinitely stiff as compared to column, if the stiffness of beam is many times the stiffness of connected column, this beam column joint act as a fixed support. And this column can be considered as fixed-ended column. On the other hand, if the stiffness of beam connected to the column is negligible, if the stiffness of beam connected to the column is negligible, beam column joint act as a free end and we can consider this column as a cantilever column. This is the summary of this topic. So based on the discussion in past few slides, let me determine the stiffness of this frame. In this problem, we are required to determine lateral stiffness of the frame. If a lateral load is applied at the beam level, assume that flexural stiffness of beam is too high as compared to that of a connected column. Axial deformation in beam is negligible. So once we assume that the flexural stiffness of beam is too high as compared to connected column, the beam column joint can be considered as a fixed support, and we take both these columns as fixed-ended column. And you will have to memorize that the lateral stiffness of a fixed-ended beam or fixed-ended column is LEI over LQ, where L is the length or height of the beam or column. The values of E and I are given. So you just insert the value of E and I and you can calculate the stiffness of the system. Now, first of all, we will have to decide whether this system is an example of springs connected in series or springs connected in parallel. पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये जो फ्रेम है ये स्प्रिंग इन सीरीज की एग्जाम्पल है या स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल की एग्जाम्पल है.
तो इस केस पैरेलल की एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें ऊपर लेटरल फोर्स, तो इसका कुछ पोर्शन ये कॉलम रेजिस्ट बाकी ये रेजिस्ट करेगा. And when springs are connected in parallel, the equivalent stiffness of the single spring is simply sum of the stiffnesses of the two springs. तो लिहाजा पहले कॉलम की स्टिफनेस और दूसरे कॉलम की स्टिफनेस ऐड कर दें, आपके पास एक जो सिंगल स्प्रिंग है इक्विवेलेंट स्प्रिंग उसकी स्टिफनेस आ जाएगी. This is shown here, and as I told you that since it is given that the stiffness of beam connected to the column is too high, in such case beam column joint can be considered as fixed support, and we can consider both columns as fixed-ended columns. And the stiffness of fixed-ended column is 12 EI over H cube. So just insert the values of EI, H1 and H2 and you will get the value of K. Now another example, a circular beam is given which have a diameter of 2 inch, length is 2 feet, and a spring is connected to the free end and a load is suspended to another end of the spring. The stiffness of this spring is 200 pounds per foot and the value of E is 29,000 psi. Ignore the self weight of the beam and calculate the stiffness of this structural system. So first step again is to decide whether this is an example of springs connected in series or parallel. So since this is an example of springs connected in series, therefore we will use the equation which was derived for calculating the equivalent stiffness of the springs connected in series. अच्छा, अब कॉलम ये जो स्प्रिंग है इसकी स्टिफनेस तो गिवन है. कैंटिलीवर बीम की स्टिफनेस you will have to remember the equation. If we have a cantilever beam with a point load applied at the free end, stiffness is 3 EI over L cube. So first calculate the stiffness of cantilever beam, 3 EI over L cube. E is given, I can be determined as the diameter is given. So the moment of inertia will be pi by 64 into d4. The length is 10 feet or 120 inch. So once we find the stiffness of beam, the stiffness of connected spring is already given. And just use this equation to find the stiffness of equivalent system, which in this case is 140.7 pounds per foot. Any question? अच्छा, तो ये चंद प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं. इसमें ये एक प्रॉब्लम मैं साफ कर देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है. अगर आप ये समझ जाते हैं तो बाकी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको होम असाइनमेंट में आज अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आपको 1 वीक
ड्यूरेशन के अंदर जमा करनी होगी, तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी क्विज की तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट वीक आपका क्विज है इसी क्लास में और आपने असाइनमेंट भी जमा करनी है। अटेंडेंस में ले लेता हूँ। दूसरे क्लास की अटेंडेंस आ गई। अच्छा, जिसमें ये लेट मी सॉल्व वन ऑफ दिस एग्जांपल। Here we need to calculate the stiffness of spring shown in figure A. You can see here we have a number of springs, and we will have to handle it stepwise. Okay, so if we consider these two springs, ये दो स्प्रिंग जो है,
अगर आप इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर, so since in this case this will be distributed, say this is spring 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 springs. Stiffness of this spring is 2K. Stiffness of this spring is K. In this case, these two springs are connected in series, in parallel, and if K23 is the equivalent stiffness of these two springs, that will be simply equal to stiffness of spring number 2 plus stiffness of spring number 3. Stiffness of spring number 2 is 2K. Stiffness of spring number 3 is K. So this is 3K. And the above given spring system reduces to spring number 1, whose stiffness is K. Spring number 2 and 3 are replaced by a single spring K23, whose stiffness is 3K. Then we have another spring 3K. Then we have a mass, and we have another final spring, spring number 5, with stiffness 2K. Now if you consider these springs and you apply a force at the end of spring number 4, that will be distributed among all the springs. Not sorry. यहाँ पर अगर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर आप हर एक स्प्रिंग में इंटरनल फोर्स मालूम करें, that will be equal to the applied force. So these three springs are actually springs connected in series arrangement. Or in this case, let K dash say K1, 2, 3, 4 is the stiffness of these three springs. Then we can use this equation, 1 by K1 plus 1 by K2, 3 plus 1 by K4. पहली स्प्रिंग की स्टिफनेस K है, दूसरी स्प्रिंग की स्टिफनेस अभी हमने
ये जो मालूम की है ये 3K है, थर्ड भी 3K। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इससे क्या आ जाएगा 5/3K। या this will be equal to के नीचे this will be equal to 3/5K. Now these three springs can be replaced by a single spring whose stiffness is 3/5K. और हमारे पास एक दूसरा स्प्रिंग है वो ये 5 रह गया 2K. Now if you apply a force here, ये जरा सोच के जवाब दें, ये फोर्स इन दोनों स्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगी या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी? अच्छा चले, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो लिहाजा these two springs act as springs in parallel and equivalent stiffness will be simply 3/5K plus 2K या 13/5K या 2.6K। आंसर देख सकते हैं 2.6K ही है। ये बाकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। नाउ वी वांट टू डेवलप द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्रेम whose stiffness was determined in problem 1। ये प्रॉब्लम 1 अभी हमने जो सॉल्व किया था। For this frame we want to develop the equation of motion. We have already determined the stiffness and we can now easily develop the equation of motion. The additional data which is given is that the lateral dynamic force is P of T and the UDL acting on the beam is 5 kip per foot. And since C is not given viscous damping coefficient, therefore we will assume that this is an undamped system. Now we can convert this distributed mass system into lumped mass system. But first let's calculate the total weight acting on the beam. The intensity of UDL is 5 kip per foot. The total weight will be
20 into 5, 100 kip. And if we calculate the mass, that will be equal to 100 into 1000 divided by 32.2. इससे हमारे पास, you shall be very careful in the units. Most of the time students make mistakes. जो यूनिट्स की कंसिस्टेंसी है उसमें अक्सर इनसे गलती होती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम जो है वो जाहिर आंसर उसका गलत आएगा. अच्छा, now we have determined the equivalent stiffness of this system. इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या थी इसकी? अगर आप पीछे देखें तो हमने जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस मालूम की थी वो 3759 किप पर फुट, 3759 किप पर फुट. और अगर हम मास को दरमियान में लम कर दे तो ये मास कितना है? 310 स्लग्स. अगेन यहाँ पे आपने यूनिट्स की कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है. स्लग इज पाउंड सेकंड पर स्क्वायर फीट. So therefore, you shall convert this kip per foot into pound per foot. Or this is 375.9 into 10 raised to power 3 pound per foot. Now the equation of motion for a single degree of freedom system is mu double dot plus cu dot plus ku is equal to p of t. Mass is 310.6 slugs. C is not given, so assume it 0. K is 375.9 10 to power 6, or in the other word 3.76 into 10 to power 6. U is equal to P of t. This is equation of motion for this single degree of freedom system when subjected to a dynamic force P of t. Now the equation of motion in problem 3.2, we will find the equation of motion for the system whose अच्छा ये सारी ये हम पीछे आ गए.
Now develop the equation of motion for the cantilever beam under the action of P of t. Neglect the self-weight of beam. A's will A's damping effect, and take E is equal to 29,000 K psi and I is equal to 150 inch 4. So एक 20 मिनट्स का हम ब्रेक करते हैं, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। So the next problem is to develop the equation of motion for the given cantilever beam under the action of dynamic force V of t. Neglect the self-weight of beam A's will A's damping effect. The problem is not very straightforward. When there is no dynamic force acting on the beam and only the gravity load of the beam is acting, the deflection will be due to only gravity load, and let those delta st or deflection due to gravity load which is static. Now when we apply a dynamic force which vary with time as well as in direction, additional displacement will be produced. Say when the dynamic force is acting in the downward direction, and at any instant of time the additional deflection due to the dynamic force is u of t, which can be represented by u. अगर हम u लिखते हैं तो भी चूंकि हम डायनामिक एनालिसिस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे मुराद u of t ही होगी. And so the total deflection at any instant of time which is represented by u bar will be equal to deflection due to static load plus deflection due to dynamic load. Now the equation of motion for this system is mu double dot bar plus C u bar dot plus K u bar is equal to P of t. It is given that the system is undamped, so C will be 0.
and we will be left with mu u bar double dot plus k u bar is equal to P of t. Mass can be calculated. Total weight acting on the beam is 1000 pounds, so the mass will be 1000 divided by G. Similarly, stiffness can be calculated. For the cantilever beam, the stiffness is 3EI over L cube. E is 29,000 psi, length is 10 feet, so we can calculate the stiffness. Now coming to U bar, which is equal to delta ST plus U. If we differentiate it once, it will be, since the static deflection due to gravity loads are constant, it does not vary with time. So this will become 0 and this will be U dot. If we differentiate it once again, we will get U bar double dot is equal to U bar. Now insert these value in this equation. And you will get M U bar plus K into delta ST plus U is equal to P of T. Now we made a mistake. In this case, if I draw the free body diagram, the equation of motion will not be like this. The total deflection, which is U bar, is equal to U plus delta ST. If I draw a free body diagram over here, since there is no damping, so damping force is 0. However, we will have elastic restoring force Fs, and we will have an inertial force Fi, and if we apply equilibrium equation along y-axis, so along the y-axis we have three forces: weight, which is acting in the downward direction, and elastic restoring force and inertial force in the upward direction, and all of these are produced due to dynamic force P of T. So we will have Fs plus Fi minus W minus P of T is equal to 0. Fs is Ku bar plus inertial force
mu bar double dot is equal to W plus P of T. Now U bar, as we just discussed, equal to delta ST plus U, and U bar, and we just derived that this is mu double dot equal to W plus P of T. अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं इस केस में स्टिफनेस किससे मालूम, स्टिफनेस जो है उसको वेट के साथ हम किससे रिलेट करेंगे? ये जो वेट एक्ट कर रहा है इस पर ग्रेविटी लोड 100 पाउंड के साथ किससे रिलेट करेंगे? Stiffness is force per unit displacement. Force is weight and the displacement is delta ST. So we can write this W is equal to K into delta ST. And if we expand this equation, now since W is K into delta ST, this will cancel with this. यहाँ पर हमारे पास KU आ जाएगा, ये K में लगाना भूल गया. And finally we will have an equation mu double dot plus KU is equal to P of T. Now you can see that weight is eliminated in this equation. The gravity load which was acting before the dynamic load is no more present here. So we can conclude from this equation that equation of motion of systems are unaffected by gravity load. इसमें आप देखें वेट अब मौजूद नहीं है, जो W जो कि पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन में मौजूद था वो अब मौजूद नहीं है. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ग्रेविटी लोड पर डिपेंड नहीं करता, और या दूसरे अल्फाज में इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप डेवलप करते हैं उसमें ग्रेविटी लोड आप कंसिडर ना करें, आप को नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं होता. बाकी इसमें K और M की वैल्यू आप डाल लें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की एग्जैक्ट ये आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगी. आपके Now solving another problem, develop the equation of motion for the cantilever beam under the action of dynamic force P of T. Neglect the self weight. We have already solved this equation. Now another we shall solve this problem. Another problem is develop the equation of motion for the cantilever beam under the action of 1000 pound weight. Assume that the time required to place the weight on beam
is very less as compared to natural time period of the system. अब इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। वो वजह ये कि इसकी एक्सप्लेनेशन स्टेज पर आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वो भी आपने नहीं पढ़ा, और ये चीज हम मॉड्यूल 5 में पढ़ेंगे कि जो टाइम किसी फोर्स को अप्लाई करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसका इफेक्ट क्या होता है। Let me ask a question. देखें, अगर आप डेली रूटीन में जहाँ पे आपको चीजों की साइंस को मालूम नहीं होता, लेकिन स्टिल कुछ चीजें आप अप्लाई करते हैं अगर चीज की साइंस या फिजिक्स का आपको पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं या चारपाई पर बैठ रहे हैं जो कि कमजोर है या टूटी हुई है थोड़ी, तो आप उससे बहुत आहिस्ता बैठते हैं, जबकि ऐसी कुर्सी या बेड जिस पर जो कि ठीक हो उस पर आप बहुत कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि आप समझते हैं कि जो कुर्सी या बेड कमजोर है, इस पर अगर आप तेजी से बैठते हैं तो इसके टूटने का खतरा है। अब सवाल ये कि आपका वेट जो है वो तो चाहे आप आहिस्ता बैठते हैं या जल्दी बैठ जाते हैं वो चेंज नहीं होता, लेकिन फिर क्या वजह है कि कमजोर चीज पर बैठते हुए, कमजोर कुर्सी या बैठते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर बैठते हैं। वजह की यह है कि जब आप तेजी से अपना बहुत कम टाइम में अपना वेट ट्रांसफर करते हैं कुर्सी या बेड पर, तो उसमें डायनामिक इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और जो डायनामिक इफेक्ट की वजह से आपका वेट बढ़ जाता है। तो यहां पर भी इसी किस्म की प्रॉब्लम ये गिवन है कि दी 1000 pound weight is placed in a very small time on the beam. When a gravity load is placed in a time less than a certain limit, it produces dynamic effect and consequently vibrations occurs. तो लिहाजा गिवन प्रॉब्लम में भी यही है कि डेवलप द इक्वेशन ऑफ मोशन when this 1000 pound weight is placed on the beam in a very less amount of time as compared to natural time period. So again we will have to develop the equation of motion. इससे पिछले the problem that we solved before this, we discussed that gravity has no effect on equation of motion. So again the equation of motion will not incorporate the gravity load, and it will be mu double dot plus k is equal to 0. And you will get the same equation
uh, which you obtained in this case. Only the difference is in this case a dynamic force was acting, which was incorporated in the equation of motion. In this case, the suddenly applied load act as a dynamic force, and we have no other dynamic force, and the equation of motion don't have P of t. Now, if you have any question, you can ask so that we can proceed further. अच्छा, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये आपके होम प्रैक्टिस के लिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप कर लें. अच्छा, नाउ द सेकंड पार्ट of equation of motion is, once we develop the equation of motion, the second part is to solve the equation of motion. And there are various methods for solving the equation of motions. The first one is classical mathematical solutions, and we will use this method, classical mathematical solutions. Then we have another method, de Duval integral, frequency domain methods, and there are numerical methods. If you perform the dynamic analysis in using a software, the software use numerical methods to solve the equation of motion. And in module 4, we will discuss how to solve the equation of motions. So here the lecture number 3 complete, and we will now start lecture number 4. So in module number 4, we will solve the equation of motion for single degree of freedom system subjected to free vibration. Or in other words, we will determine the response of single degree of freedom system when subjected to free vibration. Response is a general term which can be displacement, velocity, acceleration, and internal forces. So response covers all these effects. तो पीछे जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस डेवलप की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए, अब यहाँ पर हम फ्री वाइब्रेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह सॉल्व करते हैं उस पे डिस्कशन हम करेंगे. So first of all, you must know what is undamped free vibration. You already know that free vibration are those vibrations which occurs in the absence of a dynamic force. If you disturb the equilibrium position of a system, vibrations occurs, but if you remove the force which is responsible for disturbance, vibrations will still occur, but since the force is not present, we call it free vibration. And when the free vibrations occur in undamped systems, then the vibrations are known as undamped free vibration.
Now the general format for equation of motion of single degree of freedom system is mu double dot plus cu plus ku is equal to p of t. In case of free vibration, p of t is 0. If the system is undamped, c is 0. And the equation of motion is reduced to this form. Now this is, if you want to solve this equation of motion, this is a problem of mathematics. ये इक्वेशन ऑफ मोशन अब अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये डायनामिक्स का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में पढ़ा है कि देयर आर वेरियस सॉल्यूशंस टू डिफरेंशियल इक्वेशन. वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन which is convenient for the purpose of dynamic analysis is to assume this form, that the solution to this equation of motion has this form in which g and s are constants. Now if we substitute this value of u of t in this equation, and in order to find u double dot, you will have to differentiate it twice. तो अगर आप इसको 2 times differentiate कर लें, इससे क्या आएगा? Double dot t is equal to g into s square into e raised to power st. तो अगर आप सब u of t and u dot of t, double dot of t की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, you will get this equation. You can take g into e raised to power st as common. Now the product of these two terms is 0. And the product of two terms are 0 if either both are 0 or if any one of this is 0. या तो दोनों 0 हो या एक 0 हो. दोनों 0 हो नहीं सकते. अब कौन सा टर्म 0 है? This term cannot be 0 because whatever the value of t and s is, e की कोई भी पावर आप ले लें उससे आंसर 0 नहीं आता. The only possibility is that this is 0. The first one. And this is the quadratic equation. You can solve this. You will have two roots. The under root k over m is known as natural circular frequency, and it is represented by omega n. This is an important term, and you will deal with this term very frequently. So natural circular frequency omega n is simply under root k over m. Now you have determined the value of s, and if you insert this value of s in this equation and then solve the equation, I am skipping the derivation part. I am just writing the solution. We will have a solution of this type. Again, g1 and g are constants which can be determined. And again, if we solve this equation of motion, we solve this equation, mathematical equation. Again, I am skipping the derivation and writing the final mathematical part, which will have a format of this type: u of t equal to a into cos omega nt plus b sin omega nt. Now a and b are mathematical constants which depends upon the initial condition, and this is the solution to equation of motion for undamped systems subjected to free vibration.
Now, as I told you, A and B depends upon initial conditions. What are initial conditions? Initial conditions in this case are displacement and velocities. And more commonly, in order to find A and B, we consider the velocity and displacement at the start of free vibration when t is equal to 0. At the start of free vibration, t will be 0. So the common convenient method is to use the value of displacement at velocity at t is equal to 0 to find these constants A and t. So say at the start of free vibration, displacement is u of 0. फ्री वाइब्रेशन के स्टार्ट के मौके पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अगर आप u of 0 के लें तो t की वैल्यू अगर आप 0 इसमें पुट कर दें, you will get a cos 0 plus b sin 0. Sin 0 is 0 and cos 0 is 1. So a is equal to u of 0. तो आपके पास a की वैल्यू आ गई. अब b की वैल्यू आपने मालूम करनी है. So differentiate both sides with respect to t. ये वाली जो इक्वेशन है, you will get u dot of t is equal to minus a omega n sin omega n t plus b omega n cos omega n t. Again, if you consider the velocity at the start of free vibration, let the velocity at the start of free vibration is u dot of 0. And by inserting the value of t is equal to 0, you will get this. Again, sin 0 is equal to 0 and you get b is equal to u dot of 0 by omega n. अब आपने b की वैल्यू और ये a की वैल्यू जो मालूम कर ली है, ये सोल्यूशन पार्ट में डाल दें. You will get this equation. So this is the solution to equation of motion of undamped systems when subjected to free vibration. Now, अगर आप रिकॉल करें, एक टेस्ट हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, एक वीडियो मैंने रन की थी. ये वाली अगर आप ये पीक डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहिए, you want to find this peak displacement because we are interested in peak values for the purpose of design. So we are interested in finding the peak displacement. Again, I am skipping the derivation and writing the formula for determining the peak value of displacement during free vibration, and it can be derived that peak displacement in undamped system subjected to free vibration can be determined by this equation. And this u naught is the peak amplitude of dynamic displacement in undamped system subjected to free vibration, and this is u of 0 square plus u dot of 0 divided by omega n square. U of 0 is the displacement at the start of free vibration, u dot of 0 is the velocity at the start of free vibration,
and omega n is the natural frequency of the system. तो अगर कोई सवाल आपका है तो पूछे, वरना आज यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम आपका मॉड्यूल 3 तक जो है क्विज होगा. असाइनमेंट जो है वो मैं दूंगा, लेकिन वो मॉड्यूल 4 तक इंक्लूड होगी. क्विज आपका मॉड्यूल 3 तक होगा. तो मैं लगता है यही है कि एज यूजुअल इस क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्लास को हम ऑफ करते हैं.